हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथुजियास्ट लर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 2 के ऑल बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द फॉलोइंग? सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इवेपोरेशन। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर with a sodium chloride, so it is sublimation. थर्ड है small pieces of metal in engine oil of car. इसको सेपरेट करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन अप्लाई करेंगे। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, तो इसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे। बटर फ्रॉम कर्ड, इसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। अब ऑयल फ्रॉम वाटर, इनको सेपरेट करने के लिए हम एक सेपरेटिंग फनल का यूज़ करेंगे। टी लीव्स फ्रॉम टी, इसके लिए हम फिल्ट्रेशन करेंगे। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, इसके लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, इसके लिए हम विनोइंग करेंगे। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, इसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन या सेडिमेंटेशन कर सकते हैं। So second question, write the steps you would use for making tea. Use the words solution, solvent, solute, dissolved, soluble, insoluble, filtrate and residue. So first, take the water which is solvent in a pan and heat it. Add tea leaves which is insoluble solute and sugar which is soluble solute to the hot water. So sugar dissolves in hot water forming a solution. So bring it to boil and add milk. Filter the mixture through a strainer. So result is the tea leaves being insoluble in water remain as residue on the strainer. The liquid that passes through is the filtrate, a solution of tea compound, sugar and milk. The filtrate is your tea. So third question, Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given. The results shown as grams per 100 gram of water. So part A, what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin. तो सबसे पहले solubility of potassium nitrate which is equals to 62 gram per 100 gram of water. ये है 62 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब कि 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व्स इन 100 ग्राम वाटर एट 313 केल्विन। सो 50 ग्राम ऑफ वाटर के लिए जो पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे 62/100 इंटू 50 विच इज़ इक्वल्स टू 31 ग्राम। तो यही पूछा हुआ है। तो 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसी का है पार्ट बी। प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? Explain. So as the temperature increases, जैसे जैसे temperature बढ़ेगा, more potassium chloride can be dissolved in water, which forms a saturated solution. So when the solution cools, its solubility decreases, causing some of the dissolved potassium chloride to come out of the solution as solid. Now C part. Find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility at this temperature? So इसके लिए हम टेबल रेफर करेंगे। इसके लिए हम टेबल रेफ़र करेंगे।
293 केल्विन पे पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है बेसिकली। तो पोटेशियम नाइट्रेट इज 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड इज 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड इज 35 ग्राम एंड अमोनियम क्लोराइड इज 37 ग्राम। और हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी है? अमोनियम क्लोराइड की, जो कि है 37 ग्राम एट 293 केल्विन। नाउ इसका डी पार्ट, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट? The solubility of salt increases on increasing the temperature. जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो solubility भी इंक्रीज होता है। So fourth question, explain the following giving examples. Saturated solution. So saturated solution, it is a solution in which no more solute can be dissolved. मतलब इसमें आप सोल्यूट और डिज़ोल्व नहीं कर सकते एट अ गिवन टेम्परेचर। तो इसका एग्जांपल है व्हेन नो शुगर डिजॉल्व्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। सेकंड है प्योर सब्सटेंस। सो इट इज़ अ सब्सटेंस विद अ फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन। तो इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो फिक्स होती है, इस पर सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल होता है। एग्जाम्पल गोल्ड, वाटर, सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा। Colloid. So it is a heterogeneous mixture with particle size between 1 to 100 nanometer which is stable and shows Tyndall effect. Example milk, fog, smoke, etc. Now the last one is suspension. So it is a heterogeneous mixture in which particles are visible to the naked eye, which is unstable particles settle down. Example chalk water, muddy water, etc. Now question number 5. Classify each of the following as a homogeneous or heterogeneous mixture. Soda water, wood, air, soil, vinegar and filtered tea. So homogeneous mixture. Soda water is a homogeneous mixture. CO2 is dissolved uniformly in water. Air is also homogeneous mixture of gases which is uniformly mixed. Vinegar, acetic acid is dissolved uniformly in water. And filtered tea, it is a uniform solution of tea compounds and milk. Now heterogeneous mixtures which has non-uniform composition, like wood, it has cellulose, water, minerals, etc. And soil, it is also mixture of sand, clay, minerals, organic matter which are not uniform, and hence it is heterogeneous mixture. So soda water, air, vinegar and filtered tea are homogeneous mixtures, whereas wood and soil are heterogeneous mixtures. Now question number 6. How would you confirm that a colorless liquid given to you is pure water? So first we can do the boiling point test. Pure water boils at exactly 100 degrees Celsius at 1 atm pressure. So any dissolved impurity raises the boiling point. तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो कलरलेस लिक्विड है वो प्योर वाटर है या नहीं. So next is the freezing point test. So pure water freezes at exactly 0 degree Celsius. So अगर कोई impurity होगी तो वो lower कर देगी freezing point को. नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन. अगर तो लिक्विड प्योर होगा तो इट विल कम्प्लीटली वेपोराइज एंड कंडेंस हो जाएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस और कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा. लास्ट वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो प्योर वाटर कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है मतलब कोई स्मेल भी नहीं होती है, टेस्टलेस होता है एंड उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस. अगर ये सारे टेस्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो मतलब लिक्विड इज कंफर्म टू बी प्योर वाटर. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7. So which one of the following materials fall in the category of pure substance? सबसे पहले ice. Ice is a pure substance of H2
O. Milk. Milk is not pure substance, which is a mixture, heterogeneous mixture. Iron. Iron is a pure substance. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid is also a pure substance. Calcium oxide. Calcium oxide is also pure substance. Mercury. Mercury is also pure substance. Brick. Brick is not pure substance. It is a mixture of clay, sand, minerals, etc. Wood. Wood is also not pure substance. It is a mixture of cellulose, water, etc. Last one is air. Air is also not pure substance. It is a mixture of N2, O2, CO2, etc. Now question number 8. Identify the solutions among the following mixtures. Soil. Soil is not a solution. It is a heterogeneous mixture of sand, clay, organic matter, etc. Seawater. Yes, seawater is solution. Here water is the solvent and NaCl and other salts are solute, dissolved uniformly. Air. Air is a mixture of gas, which we can call it a solution uniformly mixed. Coal. Coal is not a solution. It is a heterogeneous mixture of carbon, minerals, impurities, etc. Last is soda water. So soda water is a solution in which CO2 is dissolved in water under high pressure. Now question number 9. Which of the following will show Tyndall effect? So Tyndall effect is shown by colloidal solution where particles scatter light. So first one is salt solution. So salt solution Tyndall effect शो नहीं करता है. ये एक ट्रू सोल्यूशन है और पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. मिल्क टिंडल इफेक्ट को शो करता है क्योंकि इसमें पार्टिकल जो साइज होता है वो कोलॉइडल रेंज में होता है. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं. वो एक ट्रू सोल्यूशन है और पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है. लास्ट इज स्टार्च सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड mixtures. So first is sodium. So sodium is element. Soil is a mixture of two or more substances physically combined. Next is sugar solution. So sugar solution is also a mixture. Next is silver is an element. Next E part, calcium carbonate is a compound. F, tin is an element. Silicon is also an element. H, coal is a mixture. Air is also a mixture. Soap is also mixture. Methane is a compound. Next is carbon dioxide is also a compound. Last is M part, blood is a mixture. Now 11th question. Which one of the following are chemical changes? First one is a growth of a plant. Yes, growth of a plant is a chemical change in which new organic compounds formed. अब next है rusting of iron. Yes, rusting of iron is also a chemical change. इसमें iron से iron oxide बनता है. Now mixing of iron fillings and sand. नहीं, ये एक physical change है. It is not a chemical change. Cooking of food. Yes, cooking of food is a chemical change. Digestion of food is also a chemical change. Freezing of water is not a chemical change, it is
physical change. Last one is burning of candle. It is a chemical change. So इसी के साथ ऑल बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं. अब अगली बार करेंगे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो. थैंक यू.